Okay, so last session, if I correctly recall, we were done with neoliberalism. We were done with rational choice theory. We were done with uh, what other theories did we do? I think we were left with, if I recall, we were left with Marxism, decentered theory, and regulations theory. So there, I think, 8 in total, and we were done with 5. So we're left with decentered, Marxism, and regulations theory. And then we decided to look at a few past papers. So we might not go the full length of a session today because this is the extra session we should have completed last session. So, but we had to go 1 hour overboard in the last session. So that 1 hour, I was probably thinking we would need a 1 hour, 30-minute class today. So I would like to finish by the break time today and not go the full length maybe. Uh, if that happens, we could just look at a few past papers and I could tell you, how you would maybe 2017 or 2018 exams, GPP exams, and we could look at a few past papers and I could tell you, how best you could attempt a certain question. So that's one thing. And then the other thing is, of course, these 3 theories. So then we get to the end of the syllabus. Okay, let's start with Marxism then, and then we move to the rest. Because, we looked at neoliberalism last time, and the Marxist thought is very, very different to that. It's different to that because, Marxism is in many ways. Okay, just give me a second. Just give me a second. I'm trying to. Okay. Okay, who was Karl Marx? Karl Marx was a renowned British sociologist who began to write uh, about class movements and class struggles at the time of the Industrial Revolution in Britain. What the Industrial Revolution had done in the late 19th century was that it had brought to the open these inherent injustices in the medieval British society. This was 1860s, 1870s, 1880s. Industrialization was taking place at a very fast pace, and on one end, it was empowering economically the bourgeoisie class in Britain, people who owned the factors of production, land, labor, capital, and then of course those people became social hegemons as well, political hegemons. So through their economic power, then uh, kind of uh, kind of traversed into their social and political power. And that was a case which was uh, more visible in that society during the Industrial Revolution than ever before. So the Industrial Revolution basically brought uh, kind of mainstreamed that debate about class struggles
and about social conflict and so on and so forth. And it mainly happened through the works of Karl Marx, who began to write about, the struggles of this proletariat class, which he called the working class in Britain. And then this became the basis of the Marxist thought, which was rooted in upheaval of the working class, and rooted in ways and means through which the working class could be empowered and working class could be equipped with um, the political, social, and economic power. So this was the idea. Uh, so based on that, Marx, wrote his magnum opus book called um, uh, Das Kapital, which talks about Marx. It's basically a foundational text in political economy, but talks primarily about Marx's opposition to capitalism, and Marx's opposition to the accumulation of wealth, and then of course land and property and so on and so forth in a few hands. And at that time, I think land was one of the considered to be the most major forms of production, because technology, of course, was beginning to develop, but technology at that time was not considered a big differential when it came to the differences in privileges of the rich and the poor, or the differences in the endowments of the rich and the poor. Technology was not a big differential in modern times, or even for that matter, something like education was not considered to be a privilege of the rich or something. The major difference during those days, I'm just trying to provide you some context about Marx. The major difference between the rich class and the poor class was the possession of land. And therefore, land was a critical factor when it came to, the possession of the rich and the possession of the poor. So those who were dispossessed, those who did not have such possessions, were of course poor people. And so therefore there was a lot of debate centered on land and land rights and property rights and etc., etc. So these were the issues at the time, and then Marx began to write about them. So mainly his work was around social conflict and class struggles, the working class and then the upper classes and their struggles. So I'd get you to write a few features of the Marxist thought and how it interacts with public policy and governance. But just telling you something that the Marxist thought is very, very similar to the later socialism that developed. The socialist ideas that developed in Russia, and then of course that developed in China and elsewhere in the world, were based on the Marxist thought, because the ultimate idea was this political and social and economic equality in the society. But they were not exactly what Marx said. They were extensions of the work that Karl Marx did. So I'll get you to write. So anyways, socialism is slightly different from, I'll tell you what perspectives to what Marx said.
For instance, one very important perspective is that Karl Marx said that there should be this massive redistribution of income and wealth in a society, and especially referring to the British society, which he thought was becoming a very capitalistic, unequal a society focusing on material possessions and wealth and so on and so forth. And there must be this redistribution, taking money away through maybe progressive taxation means and then giving it to the poor, redistributing it to the poor. But what Marx never, because Marx never, he did not dig deep into the administrative and governance issues. So he never really went into considering who would make that distribution possible. And is that redistribution an administratively viable idea or not? He did not sort of get to that part, because that part is the next step. Before you decide it kind of philosophically that, this is what needs to happen, this redistribution, taking money from the rich and giving to the poor, I think the next step was whether what sort of political chaos would this cause? Would this be administratively possible? And then considering the existing power hierarchies where there is this elite capture of resources, do you think that the elites would let this happen from an administrative and governance perspective? So these were areas, of course, that Karl Marx had to, or any philosopher thinking about sociology. And then, of course, when socialism was later applied in the Bolshevik Russia, and then in Yugoslavia, for that matter, they broke apart because of ethnic issues, but more so because of the lack of governance in those countries. And so Marx did not think about, the administrative or governance related implications of, applying this very, very revolutionary ideas of his in any part of the world, let alone Britain. Of course, Britain never applied those ideas for a few years, maybe probably in the 80s, when some left-wing leaders in both the US and Britain, Margaret Thatcher, applied her left-wing policies in Britain. Britain came slightly close to socialism, but otherwise, of course, over the last 100 years, the country where Marx expressed most of his ideas, which were, of course, offshoots of which were adopted by Bolshevik Russia and other parts of the world, Yugoslavia, of course, then in Cuba, through the revolution brought about by Fidel Castro, but everywhere else in the world, um, wherever Marxism was applied. Of course, Marxism was never applied in its true nature, but offshoots of Marxism like socialism or communism, wherever they were applied, they eventually fell down because of their inherent governance and administrative issues. That is one of the biggest criticisms and question marks on Karl Marx's theories, alongside the second criticism that I earlier spoke about, which is that Marx never really alluded to the fact that, somebody will have to make that redistribution possible. So Marx never identified who that entity would be. If somebody has to take money from the rich and give it to the poor, that person has to be, of course, a third party, an entity which makes this redistribution possible. But Marx never alluded to the fact that who that third party would be. And then, of course, it was left to the imagination of people. And then, of course, later governments around the world, philosophers, sociologists, economists, political scientists then began to imagine what Marx meant and tried to work through symbols and indications to understand what Marx might have wanted. So there was no clarity in terms of who would make that redistribution possible. Anyways, this was just, by the way, I wanted to speak a bit about Karl Marx, but this should help you otherwise as well.
it should help you otherwise as well. Yeah, Communist Manifesto is also a good book. Das Kapital, Communist Manifesto. Anyhow, but you should this conversation should help you in other courses, especially IR and current affairs and all of that, because Karl Marx is one person, and Marxist theory is one theory which is an accepted theory and an applied theory in almost all social science disciplines. And this is extremely fascinating. Name it political science, Marx, this Marxism is one of the critical theories in political science. Look at economics, of course. A lot of people think Karl Marx was an economist. Uh, Sociology, of course, he was a sociologist. So in sociology, again, the works of Karl Marx are central to the sociological theory. And anthropology, again, very, very similar to sociology. Marx ranks as one of the most renowned anthropologists. So whatever social science discipline you pick, you would find Karl Marx there. So knowing about Karl Marx's life and what he did and what was his theory all about is extremely important. Extremely, extremely important. Okay, let's write a few lines about the Marxist thought, provided this concept. So there are two people in the Marxist theory of governance. One is the bourgeoisie, which is like the capitalist, somebody who owns the means of production. And then the other class is the working class, also called the proletariat, which is the labor that sells its labor force, and it's like sells physical labor in return for wages. So that's the proletariat or the working class. So there are a few things that Marx said, and I just tell you what those are. So there's this Marxist theory of alienation that has a few components. So let's write about alienation. What Marx said about alienation. The first thing he said was, and I'm not dictating what I start dictate नहीं करूँगा, इसलिए अपने words में तेज लिखते हैं. The first thing was that Marx said was that the worker is cut off from his productive activity, playing no real part in deciding what to do and how to do. So this is what he refers to the decision-making authority. And he says that, the worker is just doing hard labor, but the thinking job is not his job, deciding what to do and how to do it, like what processes he or she should follow. So the decision authority rests with the bourgeoisie class, not with the proletariats. Second, what he thinks is that the worker is alienated from the product of his activity. He cannot use it for his own sake, even if, of course, he's the one producing it. So now he's trying to say that the actual produce of what the worker does, he is not entitled to use it. So the first argument was about the decision-making authority. The second is about entitlement. Is the worker entitled to use what he or she produces? That's the second point. Yabhi hum alienate. Why do workers get alienated? Iske upar wo baat kar rahe hain. So about alienation, Marx also said that not only the workers kind of get alienated from their capitalists or the bourgeoisie class that
owns their time and owns their work and owns their expertise. But the worker in this typical capitalist society, Marx thought, is also alienated from other workers because they want to further their self interest, and that feeling of competition replaces that feeling of cooperation. So the worker thinks about his or her own survival in that sort of a society, because the society is not there to protect you socially and politically and so on and so forth. So you have to do it on your own. And that feeling, basically, that to each his own feeling, kind of, that you're on your own, you do not have a benevolent government or someone else who could just intervene and protect you from the ills of the society, or protect you from any inherent injustices within the society, or protect you from any sort of uh, exploitation, as Marx called it, from the bourgeoisie class. So basically the worker basically begins to compete with other workers, and that sense of cooperation is replaced by the sense of competition, because everyone is fighting under that capitalist society for his her own survival. And of course, then self-interest takes over, and you begin to think about your own well-being, not about the society at large. And then, of course, the fourth point is that Marx also believed that the worker gets alienated to the point that his creativity and the sense of community dies within him. And this happens because, it's a very, these assembly line workers within those industries did the same thing every day. It was a very, very tough job, so a very mundane kind of job. So that monotony in their work sort of kills creativity and their sense for community. And the workers, of course, you could add to this that the workers become physically isolated, and then also feel mentally weak because of doing that hard grinding labor every day within the industry. So they become physically and mentally weak and isolated. Apart from the alienation theory, Marx also made a few observations uh, uh, eh, about religion and family life and so on and so forth. How do you apply this in governance? You don't need to apply this in governance. We're talking about governance, aren't we? Marxism, capitalism, socialism, these are political systems. These are systems through which people will be governed, right? For instance, if the government wants to build this system of social equality based on ideas of Karl Marx, or if it's a socialist government, जिस तरह government property property rights, land rights, taxation कैसे apply करती है. If the government begins, जैसे जुल्फकार अली भुट्टो के दौर में हुआ था, it nationalized all industries. Individuals did not have any rights to own industry. If the government does the same for land and does the same for property, right, that would alter the entire landscape of governance. Your economic governance would change, your political governance would change. So Marxism in totality is in itself a governance system. You don't need to apply it to governance. Anyways, so I could give many examples on how Marxist ideas could be applied, and uh, how what Marx thought and so on and so forth, but you don't need to get into all those details for this exam. About religion, Marx said
that likhiye ye baat, that religion is a tool by which a certain class of people, religion is a tool by which a certain class of people try to govern the masses, try to govern the masses. Religion is a tool by which a certain class of people try to govern the masses. And he called religion is the opium of the masses. That societies should not be governed by religion. So that's Marx on religion, and then Marx on governance. You also talked about the family. So that could be another heading that you could give in the exam. So about the family, Marx said, ye bhi likh lijiye, he said that there are just not two classes within a society, but also within a family. कि एक माशरे में खाली दो classes नहीं है, families के अंदर भी दो. He said there are two classes within a family. There are men who are just like the capitalists, the bourgeoisie class, and then there are women who are just like the proletariat class, and men own all the property to go. So, so he said that there is some sort of governance within the family structure, and there is exploitation happening within the families. So there is exploitation happening at the country level, but also within the families where men behave like the exploiters, the capitalists, the bourgeoisie class, and the women, of course, are the labor, the working class, which are being exploited. So that's Marxism. Okay. Okay, let's write a few lines about the regulations theory. By the way, regulations and decentered theory, they could connect it to a certain question. They are not very, very extensive, and you cannot find a lot of information on these theories. These are not very mainstream theories. So it's very unlikely that a full question appears on them. I don't know if one has appeared in the past papers, but we'd write a few lines about all of them just to be sure that we're done with the entire syllabus. Like here, let's write a few lines about regulations theory and I'll explain what it means. Okay. Regulations theory works at the intersection of
Regulations theory works at the intersection of economics and the society. This means that the economy does not operate in isolation, but rather it intersects with social. This means that the economy does not operate in isolation, but rather it intersects with social, economic, political, cultural, and other systems. Full stop. अगला पैराग्राफ लिखिए. The regulations theory focuses upon the way the regulations theory in which the economy is embedded within social, cultural, and political contexts. So it sees, आगे लिखिए, it sees the economy as self-regulating and therefore posits POSITS that posits that capitalism does not generate a social structure, but it is itself generated by a social structure. आगे लिखिए. The regulations in this case do not just means do not just mean rules and regulations, and do not just imply rules and regulations. It also means self-regulating mechanisms of a system. It also means self-regulating mechanisms of a system.
इस बात का सारी रेगुलेशन थ्योरी को मैं आसान अल्फाज में अब समझाता हूँ। कुछ लाइंस मैंने लिखवा दी हैं, कुछ मैं भी और लिखवाऊंगा, पर आसान अल्फाज में समझाता हूँ। कैप दुनिया में क्या हुआ, व्हाट हैपेंड वाज कि ये जब आपको पता है कि कैपिटलिज्म का जो एजेंडा है ना, दैट इज इन लाइन विद प्राइवेटाइजेशन एंड डीरेगुलेशन। जो कैपिटलिस्ट हैं वो कहते हैं कि प्राइवेट, जो हमने लास्ट क्लास में भी नियो लिबरलिज्म के अंदर बात की है, जो नियो लिबरलिस्ट हैं या कैपिटलिस्ट हैं, वो ये कहते हैं कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट फ्लरिश करे, प्राइवेट इंडस्ट्री बने, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इकोनॉमिक ग्रोथ स्पर करे। और उन्हें ये लगता है कि गवर्नमेंट की जो इंटरवेंशन है मार्केट्स के अंदर, जो हमने नियो लिबरलिज्म में पढ़ा था ना कि मार्केट्स विल इवेंचुअली मूव टुवर्ड्स द मोस्ट एफिशिएंट एलोकेशन, और गवर्नमेंट इंटरवेंशन जो है वो मार्केट्स में इनएफिशिएंसीज कॉज करती है। मार्केट्स आर मोर एफिशिएंट देन द गवर्नमेंट। तो ये हमने नियो लिबरलिज्म में भी पढ़ा, और ये सब चीजों को हमने उस दिन डिस्कस लास्ट सेशन में किया था, इसलिए आई एम नॉट गेटिंग इनटू ऑल दोस डिटेल्स, बट द आइडिया इज कि प्राइवेटाइजेशन और डीरेगुलेशन, वो कहते हैं कि गवर्नमेंट इंटरफेरेंस दो तीन चीजों से आती है ना, कि गवर्नमेंट की एक तो फाइनेंशियल इंटरफेरेंस है जिसमें वो पैसे गवर्नमेंट स्पेंडिंग करती भी है और पैसे कलेक्ट भी करती है इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस। दूसरी गवर्नमेंट इंटरफेरेंस है रेगुलेशंस की फॉर्म में, जहां वो मार्केट्स को से पैसा तो नहीं ले रही लेकिन मार्केट्स को रेगुलेट कर रही है। ठीक, तो वो उसके ऊपर जो रेगुलेशंस थ्योरी का फोकस है ना, रेगुलेशंस थ्योरी ये कहती है कि द इकोनॉमी कैन नॉट बी अंडरस्टूड इन आइसोलेशन। कि आप ये कह दो कि चूंकि इकोनॉमी एक आइसोलेटेड एंटिटी है और उसका कोई सोशल या पॉलिटिकल इंटरसेक्शंस नहीं है, तो इसलिए गवर्नमेंट को इकोनॉमी को रेगुलेट नहीं करना चाहिए। तो उस पे डिबेट जब आई कि जी ये रेगुलेशन, जितना जितना रेगुलेशंस आप जितना रेगुलेट करते हो आप मार्केट्स को, उतना ही मार्केट्स का जो पोटेंशियल है वो लिमिट होता जाता है, क्योंकि उनके ऊपर इतनी ज्यादा रेगुलेशंस और कंस्ट्रेंट्स आ जाते हैं दैट लिमिट्स द पोटेंशियल ऑफ मार्केट्स। तो इसलिए जो रेगुलेशंस थ्योरी है वो खाली, जो मैंने अभी आखिरी लाइन लिखवाई, खाली रूल्स एंड रेगुलेशंस इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट के ऊपर फोकस नहीं करती। अब रेगुलेशंस थ्योरी इससे एक स्टेप आगे जाना शुरू हो गई है। वो ये कहती है कि हम खाली गवर्नमेंट जो रूल्स या रेगुलेशंस, गवर्नमेंट के रूल्स हैं, रेगुलेशंस है, खाली रेगुलेशंस थ्योरी उसको स्टडी नहीं करती। वी हैव गॉन वन स्टेप अहेड टू ट्राई टू अंडरस्टैंड द सेल्फ रेगुलेटिंग मैकेनिज्म्स ऑफ अ सिस्टम। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, सेल्फ रेगुलेटिंग मैकेनिज्म्स ऑफ अ सिस्टम। उसके अंदर बात वो यही कह रहे हैं कि बहुत अरसा किसी थर्ड पार्टी को या एक एक्सटर्नल पार्टी को किसी भी मार्केट को या इकोनॉमी को रेगुलेट करना पड़ता है, लेकिन उसके बाद एक ऐसा टाइम आता है जब उन एक्सटर्नल रेगुलेशंस की जरूरत नहीं पड़ती और सेल्फ रेगुलेटिंग मैकेनिज्म्स विद इन दैट सिस्टम वो जनरेट होना शुरू हो जाते हैं, राइट। तो वो ये कह रहा है कि रेगुलेशंस थ्योरी का खाली फोकस इस बात पे नहीं है कि गवर्नमेंट की साइड से रेगुलेशंस हो। The theory also focuses upon the self-regulating mechanisms of a system. ठीक, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम अ गवर्नेंस पर्सपेक्टिव, क्योंकि रेगुलेशंस और रूल्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गवर्नेंस टूल है। जब हमने लास्ट सेशन में इंस्टीट्यूशनल गवर्नेंस को डिस्कस किया और इंस्टीट्यूशनलिज्म थ्योरी को पढ़ा था, तो उसमें हमने बहुत ज्यादा बात की थी रेगुलेशंस पे। उसमें हमने बहुत ज्यादा बात की थी रेगुलेशंस पे, कि कैसे जो फॉर्मेलिटी है विद इन दैट इंस्टीट्यूशन, द फॉर is of the foreign all these institutions, uh, there is informality, culture, tradition, और उसको डिस्कस। तो इसलिए रूल्स और रेगुलेशंस ऑफ कोर्स दे कंस्ट्रेन एक्टिविटी within institutions and then of course within economies as well, पर चूंकि इकोनॉमीज का इम्पैक्ट है, जैसे मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ कि आज इंडस्ट्री ये कहती है कि हमारे ऊपर कोई एनवायरमेंटल कंस्ट्रेंट ना लगाओ तब हम ग्रो करेंगे, लेकिन गवर्नमेंट ये कहती है कि आप इकोनॉमी आइसोलेशन में वर्क नहीं करती। ये जो मैंने वर्ड लिखा है, इट हैज, इकोनॉमी का इम्पैक्ट होता है ऑन द सोसाइटी
and then it has intersections with politics and intersections with the society, right? इसलिए for instance अगर आप बहुत ज्यादा कार्बन एमिशंस कर रही है कोई फैक्ट्री, तो गवर्नमेंट उसकी कार्बन एमिशंस को लिमिट करने के लिए अगर कोई कोई क्लाइमेट चेंज रेगुलेशंस अडॉप्ट करती है, जैसे कि पेरिस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस में 2015 में रेगुलेशंस बहुत ज्यादा डिसाइड हुई कि सारी इकोनॉमीज दुनिया में कैसे इन रेगुलेशंस को अप्लाई करेंगी और रेगुलेट करेंगी अपनी एनवायरनमेंट को। तो कोई इंडस्ट्री आके ये नहीं कह सकती कि व्हाई इज द गवर्नमेंट इंटरफेयरिंग और हमारी जो इन्वेस्टमेंट और हमारा इकोनॉमिक प्रोग्रेस इम्पैक्ट हो रही है बिकॉज ऑफ दीज कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, उन्हें बेटर प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करनी होंगी व्हिच आर नॉट हैजर्डस टू द एनवायरनमेंट। ठीक है, तो वहां पे बिकॉज द सोसाइटी एट लार्ज इज एट अ सर्टेन रिस्क, तो आप उसको नहीं करने दोगे। अब फॉर इंस्टेंस कोविड पैंडेमिक था, सोसाइटी एक रिस्क पे थी, इकोनॉमी ये नहीं कह सकती थी बिजनेस कम्युनिटी के हम गवर्नमेंट हमें क्यों रेगुलेट कर रही है विद द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स एसओपीज, हम तो अपना बिजनेस चलाएंगे और अपना बिजनेस खोलेंगे। दे कुड नॉट डू इट। दीज वर केसेस वेयर द इकोनॉमी कैन नॉट से दैट वी ऑपरेट इन आइसोलेशन। No, they have very, very strong intersections with the society and politics. अगर लोग बिजनेस खोलते तो बाकी लोग भी उनसे परचेजेस करने बाहर आते और गवर्नमेंट लॉकडाउन की पॉलिसी कभी भी अप्लाई नहीं कर सकती थी। नाउ दीज वर केसेस जब, अब ये बल्कि पेंडेमिक की बड़ी अच्छी एग्जांपल है जिससे मैं रेगुलेशंस थ्योरी समझा। दीज वर केसेस जहां गवर्नमेंट ने डायरेक्टली रेगुलेट किया। तो ये तो रूल्स और रेगुलेशंस को स्टडी करना और उसके उनके इम्पैक्ट्स क्या है उसको स्टडी करना, ऑफ कोर्स these are governance tools, rules or regulations that the government uses, लेकिन regulations तो regulations theory का हिस्सा है। लेकिन इमेजिन करें कि अब गवर्नमेंट ने इंटरवेंशन छोड़ दी, उसने सारे एसओपीज लिफ्ट कर दिए, लेकिन अब फ्यूचर में अगले 10 साल 20 साल या 30 साल जितनी आपकी इंडस्ट्री है या रेस्टोरेंट्स हैं, वहां पे वो कहते हैं कि जी हम सैनिटाइजर्स हमेशा रखेंगे, हम लोगों को डिस्करेज करेंगे कि वो हैंडशेक्स ना करें, हम लोगों को डिस्करेज करेंगे कि वो एक दूसरे को एम्ब्रेस ना करें, हमारे जितने वेटर्स हैं वो फेस मास्क पहन के रेस्टोरेंट्स में सर्व करेंगे। अब क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट के एसओपीज या एक्सटर्नल कोई रेगुलेशन एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन उस सिस्टम के अंदर सेल्फ रेगुलेटिंग, यानी उन्होंने अपने आप को खुद रेगुलेट करना शुरू कर दिया, सेल्फ रेगुलेटिंग मैकेनिज्म सिस्टम ने जनरेट कर दिया। तो रेगुलेशंस थ्योरी ये कहती है कि हम खाली इकोनॉमिक एक्टिविटी या कैपिटलिज्म के अगेंस्ट नहीं है, हम तो ये भी कहते हैं कि जब वही कैपिटलिस्टिक इंस्टीट्यूशंस जब जो सेल्फ रेगुलेटिंग मैकेनिज्म्स अडॉप्ट करते हैं, दोज आर आल्सो पार्ट ऑफ द रेगुलेशंस थ्योरी, not just how the government should or should not, or in what ways can the government regulate the private industry or the capitalists or the markets or the economy at large, but also how they regulate themselves is also within the ambit of the regulations theory. एक दो और लाइंस लिखिए रेगुलेशन थ्योरी के बाद, और फिर वहां से हम रोकते हैं। लिखिए रेगुलेशन theorists regulation theorists try to examine and explore the ways in which the instabilities arising out of capitalism are managed in today's world. And ये instabilities को correct करने के लिए, of course, there is a government which regulates the economy and so on and so forth.
So basically, regulations theory, you could think that it's a Marxist idea. And Marx thought that these capitalists should be managed through regulations. The activity of the capitalist should be managed through regulations, since they cannot operate in isolation and they could not be absolved from their social and political responsibility, because these economic agents and the economic agencies have a responsibility towards the society and the politics, because their activities impact the society, their activities impact politics. They cannot work in isolation from the society and politics. And of course, we've discussed all of that. So I hope this is understood. वो एग्जाम्पल से समझ आ गया होगा पेंडेमिक वाली कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ. Just give me a second. So it's 7:10. आप जरा थोड़ा इसको करें इन दोनों थेरीज को. Let's take a break 10-15 minutes. एंड नमाज के बाद मेरा ख्याल है नमाज का टाइम निकल रहा है, तो उसके बाद वापस आते हैं. ठीक है जी. Yeah, around 7:30. Yeah. Let's do the last theory, the decentered theory. Uh, it's a governance theory given by Mark Bever. There's a guy called Mark Bever. I think he's still alive. He's called Mark Bever. Bevir. Bevir. Mark Bever. He wrote a paper in the year 2002, where in which he postulated the decentered theory of governance. So I'll tell you, we'll write 5-6 major points of the decentered theory, which should be enough to explain what it means. So let's start writing first, and then साथ साथ मैं explain भी करता जाऊंगा. So first of all, you need to understand the idea of a state. State basically is a kind of a जो बेवर ने बात की थी कि is a centrifugal force which binds the people by certain rules, regulations, and laws. If you imagine the Pakistani state, you would see that the constitution of Pakistan is, one of the manifestations of the state. And it binds all of us together, because all of us whoever lives in Pakistan becomes a Pakistani national by virtue of that, or whoever is currently residing in Pakistan is bound by the laws of the state, and the laws originate from the Constitution of Pakistan. Constitution is the most supreme legal document, right? So what I'm trying to say here is that a state is a virtual entity. It's not a physical entity, but it comprises of all these rules and regulations and laws and so on and so on. So keeping that in mind, what the state is, and that the state is a centrifugal force which binds all the people together. Keeping this concept in mind, let's write the first point of the decentered theory of governance. The first point is, likhiye,
Mark Bever argues that a state lacks a certain center. A state lacks 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 a certain center, thereby implying that it is decentered. A state, आगे full stop के बाद लिखिए, a state is an entity which is dispersed हुई हुई है, which is dispersed by the divergent beliefs BELIEFS believes नहीं लिख देना, there's no word beliefs तो कहते हैं ना कि वो मानते हैं, हम beliefs की बात, belief की जमा की बात कर रहे हैं. Entity which is dispersed by the divergent, हर इंसान के beliefs मुख्तलिफ हैं, beliefs, customs, traditions, and cultures. पॉइंट नंबर, अच्छा इसी के नीचे आगे लिखिए, beliefs are shaped by traditions and culture. Beliefs are shaped by traditions and culture. पॉइंट नंबर 2 लिखिए, ये पहला पॉइंट खत्म हुआ, पॉइंट नंबर 2 लिखे. ये 5-6 salient features है of the decentered theory. इनको अभी आप लॉजिकली सीक्वेंस में समझेंगे तो खुद ही समझ आ जाएगी पूरी थ्योरी. States, second point है, states should be sensitive and responsive towards the beliefs of its people, of their people. States should be sensitive and responsive. एक तो वो sensitize हुई हो state कि वो अपने लोगों के beliefs और उन चीजों के बारे में sensitized हो, और दूसरा खाली sensitized ना हो, वो respond भी करती हो. तो state should be sensitive. ऐसे फॉर इंस्टेंस मैं आपको एक बात बताता हूँ कि ये डिसेंटेड थ्योरी से तो बात नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट की गवर्नेंस है, बिलीफ, अगर चाहे इस्लामिक बिलीफ सिस्टम और इस्लामिक सिस्टम ऑफ ब्रदरहुड की वजह से, इफ द mass people of Pakistan want the right of self-determination for the Kashmiri people, the state should be sensitive to such demand of the people and should be sensitive of the feelings of the people, right? ये कश्मीर की मैं वैसे एग्जांपल दे, not only should it be sensitized and cognizant of the fact that, you know, majority of people in Pakistan empathize with the Kashmiri people, majority people in Pakistan want freedom for the Kashmiri people, majority people in Pakistan feel for the Kashmiri people. Not only should the government be sensitized, but they should also, in line with this belief system of the people, should also begin to react, begin to respond. So they should also be responsive. तो ये मैं इस बात से बात कर रहा हूँ कि खाली सेंसिटाइज होने से फायदा नहीं है, बाद में उन्होंने रिस्पॉन्ड भी करना है. इसलिए मैंने दोनों अल्फाज अलग अलग लिखवाए हैं. States should be
sensitive and responsive towards the beliefs of its people, of their people. States का है तो their का word लिख दीजिए. अच्छा, बेवर आगे क्या कहता है? पॉइंट नंबर 3, द मॉडर्न स्टेट is lacking in essence or a certain center. Modern state is lacking an essence or a certain center. Point number 4, political action is derived out of individual beliefs of people. Political action is derived out of the individual beliefs of people or the collective beliefs of the community. Political action is derived out of the individual beliefs of people or the collective beliefs of the community. या सोसाइटी भी कह सकते हैं कम्युनिटी की जगह. नेक्स्ट पॉइंट, the actions of people are explained by the beliefs. Political action की बात हो रही है. How people act in political situations is also a matter of beliefs. People's actions are explained by beliefs. Next point, beliefs are themselves based on traditions. Beliefs are themselves based on traditions. ट्रेडिशंस का मतलब है सोसाइटीज या कम्युनिटीज में जो लॉन्ग हेल्ड आइडियाज हैं, जो ट्रेडिशंस की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं. तो आपका बिलीफ सिस्टम, मार्क बेवर ये कहता है कि विद इन कम्युनिटीज, विद इन सोसाइटीज, आपका बिलीफ सिस्टम जो है वो ट्रेडिशंस के ऊपर डिपेंड करता है. और आपका बिलीफ सिस्टम फिर उस कम्युनिटी के अंदर जो भी पॉलिटिकल एक्शन है उसको डिटरमिन करता है. और अब जो मॉडर्न सोसाइटी है वो ये कहता है कि उसमें चूंकि ये बिलीफ्स इतने ज्यादा डिस्पर्स्ड हैं और डाइवर्जेंट हैं बिलीफ्स, और वो सोसाइटीज इतनी डिस्पर्स हो चुकी हैं कि कोई एक बिलीफ सिस्टम या कोई एक ट्रेडिशन उस सोसाइटी का एसेंस नहीं है जिसको आप कह सकते हैं कि ये सोसाइटी का सेंटर है. इट्स अ डीसेंटर्ड थ्योरी ऑफ गवर्नेंस. कि मॉडर्न सोसाइटी को जब आपने गवर्न करना है तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इट लैक्स अ सर्टेन एसेंस, इट लैक्स अ सर्टेन सेंटर, राइट? अच्छा, बिलीव्स आर देमसेल्व्स बेस्ड ऑन ट्रेडिशंस. इससे अगला पॉइंट लिखिए, ट्रेडिशंस आर मॉडिफाइड एज न्यू डिलेमास अराइज. यानी सोसाइटीज, वो ये कह रहा है कि ट्रेडिशंस लॉन्ग हेल्ड होते हैं, लेकिन वो ये नहीं कह रहा कि देयर इज अ कॉन्स्टेंसी अबाउट ट्रेडिशंस. वो ये कह रहा है कि ट्रेडिशंस चेंज नहीं होते, बट दे कैन बी मॉडिफाइड दो अगर उस मुआशरे के अंदर कोई नया डिलेमा अराइज होता है. इसकी मैं एक माइक्रो एग्जांपल देता हूं कि हमारे मुआशरे का ट्रेडिशन है कि हम गले मिलते हैं जब हम मिलते हैं, एंड अ ट्रेडिशन दैट वी चेरिश्ड फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम. ठीक, लेकिन कोरोना वायरस आया, अ न्यू डिलेमा अरोज इन द सोसाइटी और हमारा वो ट्रेडिशन मॉडिफाई हो गया.
मिलने का जो तरीका था वो बदल गया इस मुआशरे में, राइट। ये मैं छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूं। तो ये कहता है, बेवर ये कहता है कि ट्रेडिशंस मॉडिफाई हो जाते हैं व्हेन न्यू डिलेमास अराइज। तो आप इस बात को इस तरह लिख सकते हैं, आखिरी पॉइंट लिखिए कि ट्रेडिशंस अंडर द डीसेंटर्ड थ्योरी, आखिरी पॉइंट लिखिए, ट्रेडिशंस अंडर द डीसेंटर्ड थ्योरी are not a static reality, rather they are a dynamic and ever evolving reality, and of course can be modified as dilemmas arise. Static नहीं है, डायनेमिक रियलिटी है। अच्छा, यहाँ पे जो एक लिंक की डायग्राम है वो जरा समझिए कि बेवर ये कहता है कि आपका जो बिलीफ सिस्टम है दैट डिटरमिन्स, पहले आपके ट्रेडिशंस हैं, ट्रेडिशंस डिटरमिन करते हैं आपके बिलीफ को, फिर आगे बिलीफ आपकी सोसाइटी के अंदर डिटरमिन करता है पॉलिटिकल एक्शन को, ठीक है। लेकिन ट्रेडिशंस देमसेल्व्स कैन आल्सो बी मॉडिफाइड, और वो मॉडिफाई कब होते हैं? इफ न्यू डिलेमास अराइज। दिस इज द एंड दीस 4 5 पॉइंट्स 6 पॉइंट्स जो भी मैंने 7 पॉइंट्स लिखवाए हैं, दिस इज द एंटायर थ्योरी। और इसकी गवर्नेंस की implication, why is it a theory of governance, is because it helps conceptualize the modern state which has to be governed, and that modern state, so basically बेवर की जो theory है वो आपको ये नहीं बता रही कि गवर्न कैसे करना है, how should you govern, it tells you how should you conceptualize the modern state which has to be governed, right? It doesn't tell you how to govern. वो फिर it is left to the imagination of planners and policy makers how these ideas need to be factored into their governance models, right? But it helps you imagine and conceptualize the modern society, the modern state, which is a state that lacks a certain essence or a certain center. It is a decentered state, is what Mark Bever says. यहां तक बात किसको समझ नहीं आई? और अगर आ गई है तो यस बोल दें, दैट्स द एंड ऑफ द सिलेबस, मार्क बेवर, ठीक है जी। और हम एक आधा पेपर, अगर आप लोग चाहते थे कि मैं थोड़ा सा एग्जाम अटेम्प्टिंग टेक्निक बताऊं, 2017 का पेपर जरा खोलिए, CSS, सब गूगल करें अपने अपने फोन या लैपटॉप जिस पे भी आप हैं, GPP 2017, 2018 का चलें खोलें, 2018 इज अ गुड पेपर, वो खोलें 2018। जी 18 का पेपर खोलें जी। क्वेश्चन 2 है डिफाइन एंड डिस्क्राइब। जो सवाल बहुत क्लियर कट है, बिल्कुल सीधे सीधे हैं, उनको मुझे करवाने की जरूरत भी नहीं है और वो मैं करवाऊंगा भी नहीं, आपको वो खुद करने चाहिए। कोई सवाल मुझे थोड़ा टेढ़ा लगेगा तो वो मैं करवाऊंगा, लेकिन ये आपको मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि जो चीजें हमने की हैं, पढ़ी हैं, उनसे आपका पूरा एग्जाम अटेम्प्ट होता है। डिफाइन एंड डिस्क्राइब governance as formation, management of the formal and informal mechanisms that regulate the public realms. Describe various indicators of good governance, such as participation, rule of law, transparency, accountability, blah blah blah. अब गवर्नेंस की उसने फॉर्मल एंड इनफॉर्मल मैकेनिज्म्स की वही बात की है जो हमने इंस्टीट्यूशनलिज्म को डिस्कस करते हुए की थी, कि फॉर्मेलिटी विद इन द इंस्टीट्यूशंस और इनफॉर्मेलिटी इंस्टीट्यूशंस। और पब्लिक रेल्म्स से उसका यहाँ पे यही मतलब है कि जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनके अंदर एक फॉर्मेलिटी भी है और इनफॉर्मेलिटी भी है। आपको मैंने जो गवर्नेंस की डेफिनेशन, उसकी एवोल्यूशन और कैसे पब्लिक इंस्टीट्यूशन को गवर्न करना चाहिए, यानी द फर्स्ट पार्ट इज जस्ट definition of governance. That is it. The second part of is the good governance indicators. जो 6 good governance के आपको मैंने indicators लिखवाए हैं। बताएं ये सवाल होता है नहीं होता हमारे सिलेबस से? मेरा नहीं ख्याल मुझे ये कराने की जरूरत है। It's a very childish question.
और बिल्कुल सीधा सीधा बच्चे भी इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। गुड गवर्नेंस की उसने 12 नंबर इसलिए रखे हैं कि 6 उसके इंडिकेटर्स हैं, 2-2 मार्क्स आपको हर इंडिकेटर के मिल जाएंगे। सो यू डोंट हैव टू राइट मोर देन 4 to 5 लाइंस अबाउट 4 लाइंस अबाउट ईच इंडिकेटर। तो सेकंड पार्ट के अंदर अगर आप 4-4 5-5 लाइनें लिखते हो एक इंडिकेटर के बारे में, तो आप 6 इंडिकेटर के बारे में आप 6 पैराग्राफ्स लिख दोगे, यानी 6 हेडिंग्स आपकी बन जाएंगी पार्ट बी में। और पार्ट ए ऑफ द क्वेश्चन वुड बी 8 मार्क्स, तो उसमें भी आप तकरीबन 4 हेडिंग्स लिख दोगे, ठीक है, 3 या 4। उसमें आप गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट लिख दो, एवोल्यूशन लिख दो, जो आप चीजें डिस्कस कर चुके हैं। और ये फॉर्मेलिटी और इनफॉर्मेलिटी विद इन इंस्टीट्यूशंस के ऊपर उसने फोकस किया है, तो आप आंसर में भी उन दोनों चीजों के ऊपर फोकस करो। फॉर्मेलिटी जो है विद इन इंस्टीट्यूशंस वो क्या है, रूल्स, रेगुलेशंस, लॉज। इनफॉर्मेलिटी विद इन इंस्टीट्यूशंस क्या है, वो हमने डिस्कस किया था, कस्टम्स, ट्रेडिशंस, कल्चर्स। तो हमने इंस्टीट्यूशनलिज्म के अंदर ये सारी बातें डिस्कस की हैं। ओके, let's move on to the next one. Question 3. Rational choice theory proposes that a rational person is guided by the incentive mechanism within which he/she operates. Explain the implication of this theory in relation to transforming systems and models of public sector governance. जी, कोई आपको इस सवाल के हाउ द क्वेश्चन इज फ्रेज्ड इससे आपको डिटर होने की जरूरत नहीं है। वैसे तो उसने सेंटेंस में आपके लिए एक आसानी पैदा कर दी है, क्योंकि वो ये कह रहा है कि जो रैशनल चॉइस थ्योरी में वो यही कहता है ना कि हर इंसान अपनी एंडाउमेंट, अपना इंसेंटिव, अपना सेल्फ इंटरेस्ट पुश करने की कोशिश करता है, ठीक है, which who is a rational agent, a rational individual। अब कल हमने रैशनल चॉइस थ्योरी, परसों दरसों जो भी हमारा लास्ट लेक्चर था उसी में हमने की थी। तो रैशनल चॉइस थ्योरी के अंदर डिटेल से मैंने उसकी 3 या 4 हेडिंग्स लिखवाई हैं, इंडिविजुअल चॉइस, इंडिविजुअल ब्ला ब्ला ब्ला, वो सारी बातें, यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन। और यहाँ पे यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन जो प्रेमिस है उस पूरी थ्योरी का, जिसके ऊपर पूरी थ्योरी बिल्ड होती है, यहाँ यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन की ही बात हो रही है, जिसको उसने इंसेंटिव सिस्टम की बात की है कि हर इंसान का एक इंसेंटिव सिस्टम है विद इन विच ही शी ऑपरेट्स। तो पहला पार्ट जो 10 मार्क्स का है is just rational choice theory. In response to the rational choice theorists, new institutionalism theory prescribes a more comprehensive understanding of social behavior. Explain how the new institutional theorists see self-interest, social values, and power structures as determinants of social behavior. जी, अगेन न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म वही कल्चर, वैल्यूज, ट्रेडिशंस, इन सब के ऊपर फोकस करता है। इनफॉर्मेलिटी विद इन द इंस्टीट्यूशंस, उसी को आपने डिस्कस करना है। अगेन लास्ट लेक्चर के अंदर पूरी चीज कराई हुई है। 10 मार्क्स हैं, 10 मार्क्स के लिए दोनों पार्ट्स 10-10 में डिवाइड हुए हैं। चूंकि सेकंड वाला पहले पार्ट पे बिल्ड कर रहा है, तो आई वुड सजेस्ट कि जब आप इसका आंसर करें तो न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म और रैशनल चॉइस थ्योरी की थोड़ी सी गुफ्तगू उसके अंदर जरूर करें। जैसे फॉर इंस्टेंस रैशनल चॉइस थ्योरी भी ये कहती है कि इंडिविजुअल्स को अपना सेल्फ इंटरेस्ट सबसे आगे रखना है, ठीक है, यूटिलिटीज को मैक्सिमाइज करना है। तो उसको फिर सेकंड पार्ट में आप कंपेयर इस बात से करें कि जब इंडिविजुअल्स के सेल्फ इंटरेस्ट और उनके इस चीजों की बात आती है, तो वहां पे फिर आप खाली इंस्टीट्यूशंस की अंडरस्टैंडिंग को रूल्स और रेगुलेशंस तक लिमिट नहीं कर सकते। then you have to venture into the behavioral theory, जो मैंने उस दिन की क्लास में लास्ट सेशन में बात की थी, ठीक है। और जब आप बिहेवियरल थ्योरी के अंदर वेंचर करते हैं, तो देन यू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि लोग को सर्टेन इंसेंटिव दिया जाए या सर्टेन अथॉरिटी दी जाए या पावर दिया जाए, तो लोग कैसे रिएक्ट करते हैं, उनका बिहेवियर कैसे चेंज होता है, ठीक है। तो सेकेंड पार्ट में फिर आपने इन चीजों के ऊपर बात करनी है कि कल्चर, ट्रेडिशंस, ये जो इनफॉर्मेलिटी है और ये जो बिहेवियरल चीजें हैं, जो मैंने उस दिन लास्ट सेशन में कहा था ना कि बहुत ज्यादा फोकस करती है सोशियोलॉजिकल और बिहेवियरल फैक्टर्स के ऊपर न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म, क्योंकि वो कल्चर्स, वैल्यूज, ट्रेडिशंस और लोग कैसे ऑपरेट करते हैं विद इन अ सर्टेन कल्चर, उन चीजों को स्टडी करने की कोशिश करता है न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म, ठीक है। अच्छा, चौथा सवाल है, the Planning Commission is an apex financial and public policy making institution of the government of Pakistan. Elaborate the role of PC in terms of policy development for national economic growth and development of social infrastructure through the public sector development program. I don't think I need to do this. PSDP की हेडिंग भी मैंने आपको अलग से कराई, और प्लानिंग कमीशन पे पूरा 20 मार्क्स का सवाल, एक लेक्चर हमने पूरा प्लानिंग कमीशन के ऊपर सर्व किया, पूरा 20 नंबर का सवाल हम कर चुके हैं। अब आप एक बात देखिए, क्वेश्चन 2, 3, 4, पहले तीनों सवाल आपके नोट्स में सीधे सीधे मैंने टेलर मेड
20 मार्क्स के उनके आंसर्स करवाए में, ठीक है। अब अभी तक 18 हमने एक रैंडम पेपर पिक किया है और उसके पहले के तीनों सवाल आपके नोट्स में भी हैं, और नोट्स आपके कितने मैंने करवाए में 40-50 पेजेस, ठीक है। अच्छा जी, a multitude of models. Question 5, proposed for public policy making process. Describe and explain the 6-step model proposed by Patton and Swaki that begins with defining and diagnosing the problem. Pakistan has a mixed economy with considerable large volume. I believe that the size and scope of government needs substantial reduction in order to reduce fiscal. Suggest strategies of gradual process of right sizing in the public sector. अच्छा, ये जो इसका पार्ट बी है वो एक ओपन एंडेड सवाल है, उसका सिलेबस से कोई ताल्लुक नहीं है, वैसे सिविल सर्विस रिफॉर्म से रेलेवेंट है। मैं बार बार सिविल सर्विस रिफॉर्म के ऊपर और राइट साइजिंग की बात करता रहा। लास्ट सेशन में मैंने आपको कुछ एक हमारे ग्रुप के अंदर स्लाइड्स भी भिजवाई थी सिविल सर्विस रिफॉर्म के ऊपर। थोड़ा सा सिविल सर्विस रिफॉर्म राइट साइजिंग की स्ट्रैटेजीज यहाँ पे हमने बतानी है। तो इस सवाल का कोई राइट या रॉन्ग आंसर नहीं है, इसमें एग्जामिनर आपसे आपका जहन पूछ रहा है कि व्हाट स्ट्रैटेजीज डू यू सजेस्ट, ठीक है, कि हमें राइट साइज कैसे करना चाहिए। अब इसके ऊपर बेशतर बातें मैं अभी खड़े होकर इसका आंसर 5-6 मेजर हेडिंग्स इसकी बना सकता हूं कि आप रिडंडेंट एम्प्लॉइज को आइडेंटिफाई करें, आप की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को आइडेंटिफाई करें और की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के अगेंस्ट बहुत ज्यादा रोबस्ट केपीआईज बनाए और उनके अगेंस्ट सारे एम्प्लॉइज की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करें, लो परफॉर्मिंग इंडिविजुअल्स को सर्विस से बाहर निकाल दें, वो एजेंसीज और इंडस्ट्रीज ऑफ द गवर्नमेंट जो रिडंडेंट हो चुकी हैं उन इंडस्ट्रीज का क्लोजर किया जाए तो ऑटोमेटिकली उनके एम्प्लॉइज भी सिस्टम के अंदर से कम होते जाएंगे, ब्ला ब्ला ब्ला। अब मैं ओपन एंडेड चीजें इसलिए आपको एग्जांपल्स के तौर पे बता रहा हूं कि गवर्नमेंट को अगर आपने राइट साइज करना है तो कैसे किया जाए, ठीक है। एक सर्टेन ड्यूरेशन के बाद जो एम्प्लॉइज परफॉर्म नहीं करते उनको सर्विस से फारिग कर दिया जाए, जो गवर्नमेंट प्रपोजल इस वक्त कंसिडर भी कर रही है। दैट इज अगेन अ पॉलिसी टू राइट साइज द गवर्नमेंट। अब मैं आपको चीजें बता रहा हूँ कि कैसे इसको आंसर किया जाए। हमने मेरा ख्याल है सिविल सर्विस रिफॉर्म शायद डिस्कस किया था, इशरत साहब की जो रिपोर्ट है एनसीजीआर नेशनल कमीशन ऑन गवर्नेंस रिफॉर्म्स, वो देख लें। जो प्रेजेंट इस वक्त पाकिस्तान का सिविल सर्विस रिफॉर्म का प्रोसेस है उसमें बार बार स्मॉलर गवर्नमेंट की बात की गई है। अच्छा, जब राइट साइजिंग का सवाल आता है ना तो उसको मिनिमलिस्ट स्टेट इंटरवेंशन और कैपिटलिज्म के साथ भी कनेक्ट करना है कि कैसे these ideas are at the heart of capitalism। अच्छा, इसी के अंदर आपने स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस का भी पाकिस्तान में जिक्र करना है। उसमें आजकल आपके पास बहुत बड़ी एग्जांपल है पाकिस्तान स्टील मिल्स की, कि जहां कहा जाता है कि स्टील मिल इसलिए नहीं चल पा रही कि उन्होंने 9300 एम्प्लॉइज हायर कर दिए हैं और ऑल ऑफ देम आर प्रोटेक्टेड बाय टेन्योर। अब उनको सरकार निकाल भी नहीं सकती क्योंकि वो अदालतों से स्टे ले आते हैं, ठीक है। तो इसमें रोल ऑफ जुडिशरी भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट जब राइट साइजिंग की तरफ जाती है और वो सरकारी परमानेंट एम्प्लॉइज को फारिग करती है बिकॉज ऑफ बैड परफॉर्मेंस, तो वो अदालतों से जाके अगेंस्ट देयर डिसमिसल फ्रॉम सर्विस वो स्टे ले आते हैं, ठीक है। तो एक जुडिशरी का भी एक इसके अंदर सॉर्ट ऑफ जो जुडिशियल जो आप कह सकते हैं ना कि जुडिशियल प्रोटेक्शन है लोगों के पास, दैट लीगल प्रोटेक्शन is also harming, is also curtailing the civil service reform process। तो बहुत सारा बातें इसमें रोल ऑफ जुडिशरी के ऊपर भी बात हो सकती है, स्टेट और एंटरप्राइजेस के ऊपर भी पाकिस्तान में बात हो सकती है जब राइट साइजिंग की बात है। जो इसका पहला पार्ट है ना इसी सवाल का, जिसमें पैटर्न एंड स्वॉकी का पब्लिक पॉलिसी प्रोसेस का मॉडल है, वो पैटर्न एंड स्वॉकी के नाम से आपने कंफ्यूज नहीं होना, वो ही पब्लिक पॉलिसी प्रोसेस के 6 स्टेप्स। अच्छा, एक बात याद रखिए, मैंने आप लोगों को कहा था कि 6 स्टेप्स हैं गुड गवर्नेंस के, 6 स्टेप्स है पब्लिक पॉलिसी प्रोसेस के, और 6 ही पॉइंट्स हैं मैक्स वेबर की थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी के, ठीक है। इन तीनों के ऊपर हर दफा ऑलमोस्ट एक सवाल आता है, एक सवाल आपको थ्योरीज में से आता है, रैशनल चॉइस ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक। अब 6 या 8 आपकी टोटल थ्योरीज है, उसमें से कोई सी भी आप टॉप 6 भी कर लें तो उनमें से आपका एक सवाल कवर होता है। तो आप बाकी सारे Hello? Can you guys hear me? आवाज आ रही है जी? ओके।
ओके, यहां तक समझ आ रही है मैं क्या करा रहा हूं पेपर? अब अगर आप पेपर को पढ़ें तो आपको समझ आएगी कि हम लोगों ने बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी की है और आपको गवर्नेंस से घबराने की या डरने की जरूरत नहीं है। मैं ये कह रहा हूं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं गुड गवर्नेंस के 6 इंडिकेटर्स, पब्लिक पॉलिसी प्रोसेस उसके भी 6 ही स्टेप्स हैं, मैक्स वेबर की थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी उसके भी 6 पॉइंट्स हैं। फिर जो आपके सिलेबस की थ्योरीज अलग से हैं, यही डिसेंटर्ड, रैशनल चॉइस, न्यो लिबरलिज्म, इंस्टीट्यूशनलिज्म, इन सब 6 थ्योरीज को, अब ये 4 टॉपिक्स जो है ना, इनमें से आपके 4 सवाल ऑलमोस्ट एवरी टाइम कवर हो जाएंगे, ऑलमोस्ट एवरी टाइम। तो आपको इसलिए गवर्नेंस को मैं इसलिए रिकमेंड करता हूं एज अ सब्जेक्ट, क्योंकि काफी हद तक इसमें प्रिडिक्टेबिलिटी भी है। और फिर 5वां टॉपिक प्लानिंग प्रोसेस और प्लानिंग कमीशन, वो एक ही टॉपिक है। अच्छा, कोई और पेपर निकालते हैं, चले 2019 को देखते हैं। सारा पेपर तो हम नहीं अब कर सकते, मैंने आपने 7 में से 4 सवाल करने हैं तो 4 से ज्यादा ही हमने करनी है। मैंने सिर्फ आपको ये दिखाना था कि आप गिवन के हम क्या पढ़ चुके हैं, आप उसमें से आराम से इसको कर सकते हैं। अच्छा, इसमें इस 19 का पेपर अगर क्वेश्चन 5 देखें, पूरा अकाउंटेबिलिटी का वही आपने सवाल करना है जो मैंने आपको पिछले से पिछले सेशन में या पिछले सेशन में पूरा आपको एक अकाउंटेबिलिटी का सवाल लिखवाया था। उसमें मैंने तीनों ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट की बात की। उसके अंदर आपको याद है कि हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी की बात की, और उसमें हमने जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी को अलग से डिस्कस किया, कुछ अकाउंटेबिलिटी इंस्टीट्यूशंस की बात की। तो इसमें वो एनफोर्सेबिलिटी, आंसरेबिलिटी, उन दोनों चीजों को आपने अलग अलग डिस्कस करना है। और आपको याद है कि जुडिशरी कैसे लीगल अकाउंटेबिलिटी करती है और पार्लियामेंट कैसे करती है, उसमें हमने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को डिस्कस किया, स्टैंडिंग कमेटीज को डिस्कस किया। जुडिशरी में हमने जितनी आपके पास सुओ मोटोज और रिट पिटिशंस है एज पर आर्टिकल 1843, उनके ऊपर हमने बात की थी कि कैसे दोनों जुडिशरी और पार्लियामेंट्स एग्जेक्टिव को अंडर चेक रखती हैं। फिर विद इन द एग्जेक्टिव कुछ एग्जेक्टिव के अपने इंस्टीट्यूशंस है, फेडरल ombudsman है, नैब है। तो एग्जैक्टली उसी के ऊपर ये 5वां सवाल आया हुआ है। What are the advantages and disadvantages of federal system of government? अब फेडरल और यूनिटरी को हमने डिस्कस किया था जब हमने 18th अमेंडमेंट को डिस्कस किया। यहाँ ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है, तो पूरा इसके ऊपर ये पूरा सवाल आपका डेवोल्यूशन, डिसेंट्रलाइजेशन, 18th अमेंडमेंट, नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड। अब सवाल का आपने सिर्फ गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी, एक चीज है कि सवाल को पढ़ के आपने समझना है कि क्या बात की जा रही है। अब फेडरल स्ट्रक्चर के अंदर इसका आपने छोटा सा यूनिटरी से कंपैरिजन कर देना है। एक लेक्चर में आपको याद होगा हमने फेडरल और यूनिटरी को डिस्कस किया था, जिसमें मैंने बताया था कि यूके का यूनिटरी सिस्टम है, फेडरल के अंदर जो कि डेवोल्यूशन और डिसेंट्रलाइजेशन होती है। तो हमने बार बार इसको डिस्कस किया कि डेवोल्यूशन के फायदे क्या है। अच्छा, इसको इस सवाल को आप केरला मॉडल की सेंस में भी, जो केरला में अच्छी चीजें सारी हुई थी ना, वो सारे डेवोल्यूशन और डिसेंट्रलाइजेशन के एडवांटेजेस हैं। अब वो चीजें आपके सिलेबस के अंदर है। अब केरला की दफा भी हमने पूरा लास्ट सेशन में डिसेंट्रलाइजेशन और फिस्कल डेवोल्यूशन और इन सब चीजों को डिस्कस किया था। तो वो सारे फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की जहां बात होगी, उसका मतलब यही है कि आपने गवर्नमेंट को स्मॉल फेडरेटिंग यूनिट्स यानी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स और उनके नीचे लोकल गवर्नमेंट्स में डिवाइड कर दिया। यूनिटरी का मतलब है जैसे यूके में है कि एक ही यूनिट है, ठीक है, उसके मल्टीपल गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेटिव डिसएडवांटेजेस है, क्योंकि वो एक बहुत लार्ज यूनिट, इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल फ्रॉम अ फाइनेंशियल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव। ठीक है। फिर इसके अंदर आप चाहे ना तो डिसेंटर्ड थ्योरी को भी लिंक कर सकते हैं कि जब आप एक यूनिट बनाते हैं ना, तो आप ये अज्यूम, अब देखिए मैं चीजों को लिंक कर रहा हूं आपके सिलेबस को, कि जब आप एक यूनिट बनाते हैं तो आप, मैंने पहले ये सवाल नहीं पढ़ा हुआ, फर्स्ट टाइम पढ़ रहा हूं, बट अभी मैं आपके साथ बैठ के लिंक कर रहा हूं कि एग्जामिनर को ये चीज अच्छी लगेगी कि आपको सवाल फेडरल सिस्टम
सिस्टम के ऊपर आया, लेकिन आपने उसको डिसेंटेड थ्योरी के साथ भी लिंक करना शुरू किया। आपने 18th अमेंडमेंट भी लिख दिया, एनएफसी भी लिख दिया, केरला मॉडल लिख दिया एज एन एग्जांपल, और आपने फिर साथ उसके अंदर, उसी के अंदर आपने 18th उसको व्हाट यू कॉल इट डिसेंटेड थ्योरी को लिखा कि जब हम 1 यूनिट बनाते हैं तो हम ये इरोनियसली अज्यूम कर लेते हैं कि इस पूरे एक यूनिट का एक कोई सर्टेन सेंटर है या एक कोई एसेंस है, और इसको एक सेंटर से गवर्न किया जा सकता है। जबकि अब देखिए, मैंने यही बात की थी ना कि गवर्नेंस कैसे होनी चाहिए, ये तो मार्क वेबर नहीं बताता, पर मार्क वेबर ये जरूर बताता है कि स्टेट्स को कैसे इमेजिन किया जाए। तो जब यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नेंस, जब आप यूनिटरी फेडरल सिस्टम में यूनिटरी लेते हो, तो उसमें एक तो ये होता है कि एक बहुत ही लार्ज सिस्टम को एक सेंटर से गवर्न करना पड़ता है। उस पूरे यूनिट की बहुत मुख्तलिफ, अब आपको पता है कि माजी में यहाँ भी 1 यूनिट स्कीम आई और पाकिस्तान में भी वो फेलियर हुआ, क्योंकि अब हम छोटे प्रोविंसेस की तरफ भी जाना चाह रहे हैं। अब पंजाब इतना बड़ा प्रोविंस है, पंजाब के अंदर जो सारे एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हैं, सारे एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज के हम बहुत सारे रीजन्स की जो डिमांड्स हैं उनको मीट नहीं कर पाते, क्योंकि हर रीजन के रीजनल डायनेमिक्स फर्क है। और एक पंजाब गवर्नमेंट, साउथ पंजाब है फॉर इंस्टेंस, उनकी डिमांड्स को मीट नहीं कर सकती। वी कैन नॉट बी, द गवर्नमेंट कैन नॉट बी रिस्पॉन्सिव टू देयर डिमांड्स। तो वो जो एक लार्ज प्रोविंस को या एक लार्ज स्टेट को के जो मैनेजमेंट के इश्यूज हैं, वो सारे डिसएडवांटेजेस हैं ऑफ अ यूनिटरी सिस्टम, ठीक है। और फिर फेडरल के जो एडवांटेजेस हैं, फिस्कल डिसेंट्रलाइजेशन, डेवोल्यूशन, उनकी वजह से कैसे बॉटम अप और एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग कैसे पॉसिबल होती है, वो सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। पार्टिसिपेशन इनहैंस होती है, इंक्लूजन इंश्योर करते हैं, ठीक है, डेमोक्रेटिक इंक्लूजन इंश्योर होती है, दैट ऑल पीपल आर इंक्लूडिंग इन द डिसीजन मेकिंग, इंक्लूडेड इन द डिसीजन प्रोसेस, ठीक है। और ये चीजें हमने केरला के अंदर सारी डिस्कस की थी, पार्टिसिपेशन, इंक्लूजन, यूथ मोबिलाइजेशन, ये सब इस सवाल का हिस्सा बन सकती है, यानी फेडरल सिस्टम के जो भी एडवांटेजेस है। और ये सवाल इतना बेसिक है, पाकिस्तान अफेयर्स में भी बार बार पूछा जाता है। Discuss the ways in which the legislative and judicial branches interact with the bureaucracy. Explain why these interventions are necessary and useful. Again, ये वही सवाल है, देखिए, it's a very very bad paper, क्योंकि अगला सवाल में जो अकाउंटेबिलिटी का सवाल है वो भी ऑलमोस्ट, उसमें सिर्फ अकाउंटेबिलिटी पे आपने फोकस करना है, लेकिन यहाँ पे जो इंटरैक्शन की भी बात हुई है, इस सवाल को आपने 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। एक, आपने बताने की कोशिश करनी है कि ब्यूरोक्रेसी के साथ लेजिस्लेचर कैसे करती है और ब्यूरोक्रेसी के साथ आपकी, अच्छा, अब चूंकि ये सवाल ब्यूरोक्रेसी का है तो इसको आप हमेशा स्टार्ट करेंगे मैक्स वेबर के मॉडल ऑफ ब्यूरोक्रेसी, ठीक है। और मैक्स वेबर ने उसके अंदर इंटरैक्शंस विद, पहले तो ये देखें कि लेजिस्लेटिव और उसके साथ वेबर ने कोई बात की थी इंटरैक्शंस की, ठीक है। दूसरा, विल्सन ने ब्यूरोक्रेसी के बारे में क्या कहा था, अब ये पूरा सवाल उसके ऊपर है। अब ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं। विल्सन ने कहा था कि पॉलिटिक्स और इन दोनों को टोटल सेपरेशन चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन की और पॉलिटिक्स की, जिसको उसने कहा था पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटमी। अब इसमें आप फिर विल्सन की थ्योरी भी इस सवाल के अंदर लिखेंगे, क्योंकि उसने कहा था एक टोटल डाइकोटमी। अब विल्सन की थ्योरी आप इसके अंदर इन्वोक करने की कोशिश करेंगे, और पूरा सवाल चूंकि उसके ऊपर है तो आप उसके बाद आप तीसरे पार्ट पे इस पे आएंगे। अच्छा, अब ये सवाल है, मैं आप सबको रेकमेंड करूंगा, मैंने शुरू में भी शायद बात की थी कि बहुत सारा इस सवाल, इस पेपर को आइन के हवाले से आपने करना है। तो इसमें जो आर्टिकल सुओ मोटो और आर्टिकल 184(1), 184(2) जितनी रिट्स है ना कॉन्स्टिट्यूशन में, यानी आर्टिकल 184(1), 184(2), 184(3), 180, तो वो आपको सारी रिट्स याद होनी चाहिए, क्योंकि जुडिशरी का एडमिनिस्ट्रेटिव के मामलात में जुडिशरी जब इंटरवीन करती है तो वो उन्हीं रिट्स के थ्रू करती है। वो है ना सारी को वारंटो और मैंडेमस, और वो आप इस सवाल के अंदर साइट करने की जरूरत है कि जुडिशरी की रिट्स कौन सी है जिसकी थ्रू वो ब्यूरोक्रेसी के ऊपर चेक करती है, ठीक है। और फिर जो आपकी लेजिस्लेचर की है वो है फ्रॉम अ पॉलिसी मेकिंग पर्सपेक्टिव, उसमें फिर आप सारी ये बातें कर सकते हैं कि पार्लियामेंट्री असेंट चाहिए पॉलिसीज को। फिर उसके अंदर आप वही पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और उनकी वो अकाउंटेबिलिटी इंस्टीट्यूशंस की भी बात की जा सकती है, यानी
मैं अगर इस सवाल को अटेम्प्ट करूंगा तो मैं वेबर, विल्सन, उसके बाद एक हेडिंग में लेजिस्लेचर के ब्यूरोक्रेसी में इंटरफेरेंस की बनाऊंगा, दूसरी हेडिंग में उनकी बनाऊंगा, और इनके इंटरेक्शन को भी, और इस पॉलिसी प्रोसेस या लीगल प्रोसेस के थ्रू भी कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस पॉलिसीज जो है वो अगर लेजिस्लेचर में बन रही है तो उनकी इंप्लीमेंटेशन एग्जीक्यूटिव के पास है। अगर लॉ लेजिस्लेचर बना रहा है तो उसकी इंप्लीमेंटेशन, उसकी एनफोर्समेंट जो है, तो अब ये एक इंपॉर्टेंट इंटरेक्शन है। ठीक है, अच्छा, उस पब्लिक पॉलिसी से अगर डाइवर्जेंस है तो उसकी ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म जो है वो जुडिशरी के पास है। अगर कोई इंसान को, ठीक है, अच्छा, एक बहुत बड़ा जुडिशरी और इसका इंटरेक्शन जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की सूरत में है। मैंने वो भी आप लोगों को छोटा सा कराया हुआ है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ वो लॉ है जो एग्जीक्यूटिव को गवर्न करता है, एग्जीक्यूटिव की इंटरनल फंक्शनिंग को। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की भी इसके अंदर एक हेडिंग बन जाएगी, जुडिशरी और ब्यूरोक्रेसी का जो आपस में इंटरेक्शन है। और उसी में फिर आप साथ साथ अलग हेडिंग में चाहें तो आर्टिकल ये रेट्स को और 184(3) और उनको भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपका कॉन्स्टिट्यूशन पे ग्रिप अच्छी नहीं है तो मैं मशवरा दूंगा कि ये सवाल फिर आप मत कीजिए, फिर आप बाकी कोई और 4 सवाल करने की कोशिश कीजिए। अकाउंटेबिलिटी वाला एक सवाल आपका हो जाता है। अच्छा, आप जो लास्ट सवाल आप 8 देखेंगे ना, उसके आप ये 4 पार्ट्स देखें। हाउ डू पब्लिक मैनेजर्स एंगेज इन पॉलिसी मेकिंग? एक्सप्लेन मुझे करने की जरूरत नहीं है, पूरा पब्लिक पॉलिसी प्रोसेस वाली चीजें 2-4 आप इसमें लिख देंगे प्रोसेस की। हाउ डू लेजिस्लेटर्स एंगेज इन पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन? ठीक है, अब लेजिस्लेटर्स किस तरह के कवानीन बनाते हैं जिनके थ्रू पॉलिसी की इंप्लीमेंटेशन इंश्योर होती है, खाली पॉलिसी मेकिंग नहीं होती, इंप्लीमेंटेशन इंश्योर होती है। Is the politics administration dichotomy still valid today? Why or why not? और इस ये अगेन ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन है। जो सेकंड वाला इसका पार्ट है उसको मैं भी एक्सप्लेन करता हूँ। प्रोवाइड वन डिटेल्ड एग्जांपल इन एन एरिया which you are familiar. अगेन वेरी ओपन एंडेड क्वेश्चन, इनका सिलेबस से कोई ताल्लुक डायरेक्टली नहीं है। वैसे आपको बताऊं कि 19 का पेपर लोग समझते थे कि बहुत ही मुश्किल पेपर आया था और वेरी वेरी डिफिकल्ट। ये ओपन एंडेड सा एग्जाम था और लोग चूंकि ओपिनियन बेस्ड और ओपन एंडेड एग्जाम्स को पसंद नहीं करते, अच्छा, जो पहला सवाल है उसमें आपने अगेन पब्लिक मैनेजमेंट और प्राइवेट मैनेजमेंट या पब्लिक गवर्नेंस और कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर फर्क बताने हैं, तो वो वही डिफरेंसेस हैं जो हमारी ट्रेडिशनल पब्लिक मैनेजमेंट में है और न्यू पब्लिक मैनेजमेंट में। कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है? फोकस ऑन प्रॉफिट्स, फोकस ऑन एफिशिएंसी, ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस है ना। उसमें एंड गोल जो है वो एफिशिएंसी है, उसमें एंड गोल सर्विस डिलीवरी नहीं है, मेजर डिफरेंस है। एंड गोल एफिशिएंसी है और प्रॉफिट्स है, जबकि पब्लिक मैनेजमेंट में एंड गोल, पब्लिक गवर्नेंस में एंड गोल है सर्विस डिलीवरी। यू हैव टू डिलीवर टू द पीपल। ठीक, राइट। कॉर्पोरेट गवर्नेंस में द रूल इज यूटिलिटी या प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज द रूल। गवर्नमेंट में प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन रूल नहीं है, गवर्नमेंट में है इंक्लूजन, कवरेज, के ज्यादा से ज्यादा लोगों को इंक्लूड किया जा सके। पार्टिसिपेशन इज द रूल। ये ना किया जा सके कि चंद लोगों से हमें जिनसे प्रॉफिट्स मिल रहे हैं हम उन्हीं कस्टमर्स को सेटिस्फाई करते हैं हु कैन बाय द सर्टेन सर्विस। ठीक, तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस के और पब्लिक सेक्टर गवर्नेंस के। तो इसमें मैंने आपको शायद न्यू पब्लिक मैनेजमेंट की कुछ 2-4 चीजें लिखवाई हो एनपीएम की। तो वो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट जो है वो यही है कि ये जो पुरानी पब्लिक मैनेजमेंट या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थी उसको अब रिप्लेस किया जा रहा है बाय कॉर्पोरेट स्टाइल ऑफ पब्लिक मैनेजमेंट। कि सरकार के इंस्टीट्यूशन को, जैसे आप ये नादरा को देखें या पासपोर्ट ऑफिस को देखें ना, तो उन्होंने अब कस्टमर सर्विस पे फोकस करना शुरू कर दिया। सरकार में कस्टमर सर्विस का कोई कॉन्सेप्ट पहले नहीं था। ठीक है, अब सरकार में कस्टमर सर्विस को फोकस करना शुरू कर दिया। ठीक है, फिर सरकार प्रोसेस से बाहर निकल आई। अब
एक डिफरेंस ये भी मैं चलने लिखवाता हूं कि गवर्नमेंट हिस्टोरिकली वाज वेरी प्रोसेस ओरिएंटेड. हाँ, एक मेजर डिफरेंस, सरकार जिस तरह चलती है उसका फोकस है ऑन ऑन रूल्स, रेगुलेशंस एंड लॉज. गवर्नमेंट रूल्स के मुताबिक चलती है. कॉर्पोरेट गवर्नेंस चलती है रूल्स के या लॉज के मुताबिक नहीं. कॉर्पोरेट गवर्नेंस चलती है रिजल्ट्स के मुताबिक. सो देयर इज अ फोकस ऑन द रूल्स रेगुलेशंस, यहां देयर इज अ फोकस ऑन रिजल्ट्स. तीसरा डिफरेंस ये हो गया. चौथा डिफरेंस है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस में एफिशिएंसी और साथ प्रोडक्टिविटी के ऊपर फोकस है. गवर्नमेंट में प्रोडक्टिविटी पे फोकस नहीं है, गवर्नमेंट में प्रेजेंस पे फोकस है. यू हैव टू बी देयर. आप पहुंच के कुछ कर पाते हैं, प्रोडक्टिव हैं या नहीं, उस पर फोकस नहीं है. तो अब कॉर्पोरेट गवर्नेंस ये कहती है कि आप ना हो, रिमोटली काम करो, जहां मर्जी से करो, यू नीड टू बी प्रोडक्टिव एंड यू नीड टू प्रोड्यूस रिजल्ट्स. इस बात को हम इस तरह भी कह सकते हैं कि सरकार का प्रोसेस पे फोकस है, रिजल्ट पे फोकस नहीं है. कि प्रोसेस क्या है. तो आप गवर्नमेंट को ये भी कह सकते हैं कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थी वो प्रोसेस ओरिएंटेड थी. कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑन द अदर हैंड डज नॉट फोकस ऑन द प्रोसेस, इट फोकसेस ऑन द रिजल्ट. रिजल्ट ओरिएंटेशन है गवर्नमेंट में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या पब्लिक गवर्नेंस में प्रोसेस ओरिएंटेशन है. सरकार का प्रोसेस है, ये स्टेप के बाद ये करो, ये के बाद ये करो, एंड यू हैव टू डू ऑल ऑफ दैट. ठीक है. इसके और पॉइंट्स के लिए आप गूगल कर लें इसको कि क्या फर्क है ओल्ड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या पब्लिक मैनेजमेंट में और न्यू पब्लिक मैनेजमेंट में. जो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट है वो सारी कॉर्पोरेट गवर्नेंस ही है बेसिकली. ओके, शुड वी स्टॉप हियर देन? अगर कोई और सवाल आप लोगों को तंग करते हैं तो मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं. मैं आपको बता दूंगा कि इस सवाल पे आप किन एरियाज पे फोकस करें, या इसका क्या रिसोर्स है हमारे सिलेबस के, या नोट्स में से कौन सा हिस्सा पिक कर सकते हैं. प्रो पुअर ग्रोथ होती है, यहाँ किसी ने सवाल पूछा, चलें लेट्स, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन वी कैन टैकल. प्रो पुअर ग्रोथ है कि आपकी ग्रोथ फोकस करे, must be responsive to the demands of the poor people or the needs of the poor people. Pro-poor growth, अब बाजी में जो इकोनॉमिक ग्रोथ यानी जीडीपी ग्रोथ होती है, उस ग्रोथ के सम्राट, उसके बेनिफिट्स एक बहुत छोटा तबका लेता है. तो प्रो पुअर ग्रोथ ये कहती है, ये आइडिया है कि ग्रोथ मस्ट बी इंक्लूसिव, growth must be participatory, it must include the poorest of the poor segments of the society. ग्रोथ के जो इम्पैक्ट्स हैं, पिछली गवर्नमेंट में 5.8% ग्रोथ हो रही थी, 5 सालों में 5% की एवरेज से ऊपर ग्रोथ थी. लेकिन क्या पॉवर्टी रिडक्शन हो रही थी पाकिस्तान से? अगर नहीं हो रही थी तो इसका मतलब है कि ग्रोथ, कंट्री की इकोनॉमी तो ग्रो कर रही है, बट हु इज बेनिफिटिंग फ्रॉम द ग्रोथ? ओनली अ सर्टेन अपर सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी. तो दुनिया ने जब इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ की बात हुई, इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ जिसको हम प्रो पुअर ग्रोथ भी कहते हैं, तो प्रो उसका मतलब यह है कि गवर्नमेंट्स वो पॉलिसीज और वो स्ट्रैटेजीज बनाएं दैट फोकस ऑन द पुअर. जैसे हमने प्रोग्रेसिव टैक्सेशन की बात की अभी, मार्क्स की जब हम बात कर रहे थे कि पैसा रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाए अमीर से गरीब तक. ठीक है, गरीब के लिए यूथ, लेबर, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाए, हेल्थ, एजुकेशन यानी ह्यूमन डेवलपमेंट एनहांस किया जाए. अब ये सारी प्रो पुअर स्ट्रैटेजीज हैं. जिस तरह गवर्नमेंट ने अभी एहसास प्रोग्राम के अंदर, इनको हम कहते हैं कैश ट्रांसफर प्रोग्राम्स. पाकिस्तान में जो जो हमने कैश ट्रांसफर प्रोग्राम है, उसका नाम पहले बेनजीर इनकम सपोर्ट था, अब उसको एहसास कर दिया, जो भी उसका नाम है. तो ये सारे कैश ट्रांसफर प्रोग्राम्स भी अब एक स्ट्रैटेजी है जिसके थ्रू आप प्रो पुअर ग्रोथ इंश्योर करते हो कि आपने ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ तो हुई, लेकिन बाद में यू हैव टू कन्वर्ट दैट ग्रोथ इनटू बेनिफिट्स, इनटू एम्पावरमेंट ऑफ द पुअर क्लास, इनटू एलिविएशन, एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी.
ये है प्रो ग्रोथ। सर पब्लिक एड कब स्टार्ट करना है? पब्लिक, सॉरी, पब्लिक एड, वो क्या है पब्लिक एड? सर देयर वाज इकोनॉमिक और नो इकोनॉमिक। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स की बात कर रहे हैं, सीएसएस के? मैं तो पब्लिक एड नहीं नोआ में पढ़ाता। मैंने तो आज तक पब्लिक एड नहीं यहाँ पे, एक जगह मैं बहुत साल पहले पढ़ाता था, 2-3 साल पहले। लेकिन आपको क्यों लग रहा है कि मैं पब्लिक एड पढ़ाऊंगा या पढ़ाता हूँ? ओ, मैंने एक दिन शायद ऐसी कोई बात की थी कि अगर वो मैंने ये कहा था कि अगर, शायद आप लोग उस वजह से कंफ्यूज हो रहे हैं, वो मैंने ये कहा था कि अगर 20 के अंदर जीपीपी का कुछ स्कोरिंग ट्रेंड ऐसा आया कि हमें लगा कि 21 में जीपीपी टारगेट हो सकता है या हिट हो सकता है, और बच्चे अगर पब्लिक एड की तरफ मूव करना चाहे, तो हम क्विकली कोई नवंबर दिसंबर में पब्लिक एड का भी कुछ ना कुछ कर लेंगे। तो ये बात हुई थी। अभी तो हम पब्लिक एड स्टार्ट करने का मेरा तो कोई प्लान नहीं है। सर एनी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स गेस? नहीं, गेस मैं अभी तो आपको शायद ना दे पाऊं। लेट्स गो क्लोज टू द एग्जाम, फिर बात करेंगे स्पेसिफिक। मैं गुड गवर्नेंस इन इस्लाम इसलिए नहीं पढ़ाता कि वो एग्जैक्टली वही है जो इस्लामिक स्टडीज के अंदर है। तो वो आई लीव इट टू योर गुड प्रेपरेशन ऑफ इस्लामिक स्टडीज। उसमें पूरा टॉपिक है गुड गवर्नेंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इस्लाम, जिसमें हजरत अली के गवर्नेंस के ऊपर लेटर्स भी हैं, और कैलिफ्स के भी लेटर्स हैं। तो वो पूरा एक टॉपिक है इस्लामिक स्टडीज का, जो सारे कैंडिडेट्स इस्लामिक स्टडीज में करते हैं। और मैं उसको इस्लामिक स्टडीज के ऊपर इसलिए छोड़ देता हूँ कि वो कंपल्सरी सब्जेक्ट है, सबने पढ़ा हुआ है, तो सबको वो करना ही पड़ता है। बल्कि मैं सिलेबस के अंदर मैं ये भी लेवरेज अक्सर ले लेता हूँ कि 18th अमेंडमेंट और एनएफसी नहीं कराता, क्योंकि वो पाकिस्तान अफेयर्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबने वहां पे पाक अफेयर्स की क्लासेस में किया होता है। मैं अपना टाइम वहां से बचा लेता हूँ, तो इसलिए इसलिए वो नहीं किया हुआ। ठीक है जी, चलें यहाँ रोकते हैं सेशन। दिस वाज आवर लास्ट क्लास। आई होप यू हैड अ गुड टाइम। मैंने तो बड़ा एंजॉय किया। आप में से माजी में हमेशा क्लासेस में सबकी शक्ल देखते थे, मिलते थे। मेरी अपने स्टूडेंट्स के साथ दोस्तियां भी होती हैं, मजा भी आता है गपशप का। और टीचिंग का सबसे इम्पोर्टेंट, द मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ टीचिंग इज दिस सोशल इंटरेक्शन। वो पेंडेमिक की वजह से निकल गया बीच में से, पर आई विश यू ऑल द बेस्ट ऑफ लक। मुझे कुछ लोगों के जो ज्यादा कमेंट्स करते हैं उनके नाम याद हो गए हैं या नाम याद हैं, और कुछ लोगों की नई आवाज का आप लोगों का मेरे साथ कमेंट्स का रिश्ता है, और मेरा आप लोगों के साथ ही आवाज का रिश्ता है। वी प्रॉब्ली नॉट सीन ईच अदर। आप लोगों ने शायद मुझे नहीं कभी देखा, और मैंने आप में से बेशतर लोगों को नहीं देखा, बट वी आई आई एम मेरे वो जो हमेशा मेरे स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनके लिए मेरी एक दिल में एक बड़ी स्वीट सी फीलिंग होती है फॉर ऑल माय स्टूडेंट्स। और आई विश यू ऑल द बेस्ट ऑफ लक। मेरी उम्मीद है, इंशाल्लाह मेरी दुआ भी है कि आप सब पास करें, और आप सब अच्छे एलोकेट भी हों, और मेरे सब स्टूडेंट्स पास करें, सब एलोकेट हो। मेरी आप सबके लिए दुआ है। और अक्सर मुझे, क्योंकि बच्चे अब टेक्स्ट बहुत ज्यादा करते हैं व्हाट्सएप पे, तो अक्सर ऐसा होता है कि कुछ किसी कभी आप कोई सवाल पूछते हैं तो वो कुछ टेक्स्ट के नीचे ड्राउन हो जाता है। तो कभी ये ना समझिएगा कि मैं सवाल जवाब नहीं देना चाह रहा या मैं नहीं देना चाहता। आई एम ऑलवेज अवेलेबल। और जब भी आप लोग कोई सवाल पूछें व्हाट्सएप पे या फेसबुक मैसेंजर पे, तो जरूर क्वेश्चंस पूछिए। आई वुड लव टू हेल्प। और खैर एनीवेज, बेस्ट ऑफ लक। और इंशाल्लाह कभी अभी एकेडमीज दोबारा खुलेंगी